Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस कार्तिक मास की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, श्री चैतन्य चरितमृत कक्षा में। और आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे बीच में उपस्थित हैं हिज होलीनेस भक्ति वासुदेव स्वामी महाराज। तो एक संक्षिप्त परिचय महाराज के बारे में, हालांकि बहुत लंबा परिचय है। महाराज की वेबसाइट है हिज होलीनेस भक्ति वासुदेव स्वामी.com। तो महाराज इस्कॉन में दीक्षा गुरु होने के साथ साथ भागवत एक प्लेटफॉर्म है भागवत सभा, उसके भी सदस्य हैं, गवर्निंग बॉडी कमीशन के भागीदार है। महाराज ने कृष्ण चेतना के संदेश का जो प्रचार प्रसार की पूर्णकालिक सेवा में एक भिक्षुक के रूप में 45 साल से अधिक समय बिताया है। तो महाराज पहले ब्रह्मचारी थे, उसके बाद महाराज ने संन्यास लिया और 1984 में लागोस नाइजीरिया में महाराज ने इस्कॉन ज्वाइन किया और 1986 में हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज से दोनों दीक्षाएं प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने हिज होलीनेस जयप्रदाका स्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त की 2009 में। और अपने गुरु के आदेश के तहत महाराज पश्चिम अफ्रीका में आंदोलन के शुरुआती दिनों में कई परियोजनाओं का संचालन किया है, जिसमें शामिल है
अपनी दीक्षा के कुछ महीने बाद ही वह वहाँ पे प्रबंधन समिति के सदस्य बन गए और बाद में इस्कॉन के लागोस स्टेट चैप्टर के अध्यक्ष बने, जहाँ उन्होंने इस्कॉन लागोस के मंदिर निर्माण की भी देखरेख की। 1990 में महाराज ने नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका उपक्षेत्रियों के क्षेत्रीय सचिव के रूप में कार्य किया, जो फरवरी 2009 में संन्यास लेने के बाद महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ महाराज एक बहुत ही प्रख्यात स्कॉलर भी है। महाराज को अभी पीछे कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाहर के जगत में उनकी स्कॉलरशिप को लेके, जिसमें से कुछ अवार्ड्स इस प्रकार से हैं। महाराज को मेमेंटो ऑफ ऑनर मिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। महाराज को बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला बाय वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लंदन यूनाइटेड किंगडम में जून 28, 2021 को। महाराज का जो टाइटल था उस समय प्रेजेंटेशन का, उसका टॉपिक था सोनिक थेरापेटिक इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड, अ फिनोमिनल स्टडी। उसके बाद महाराज को इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी प्राप्त हुआ इस्कॉन में सन 2003 में। तो महाराज बहुत विख्यात पांडित्य निपुण हैं, बहुत वैष्णव थियोलॉजी के स्कॉलर भी हैं। तो आइए हम उत्साहपूर्वक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज के साथ आए हुए हम दो भक्तों का और स्वागत करते हैं, हिज ग्रेस निताई गुणमणि प्रभु और साथ ही साथ प्रदीप प्रभु का भी हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janvala Giri Bharadari Gopi Janvala Giri Bharadari Yasodhanandana Brajana Ranjana Yasodhanandana Brajana Ranjana Yasodhanandana Brajana Ranjana Jamunate Avanatare Jamunate Avanatare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janvala Giri Bharadari Gopi Janvala Giri Bharadari
Yashodanandana Brajanaranjana Yashodanandana Brajanaranjana Yashodanandana Brajanaranjana Yamunatira Vanachani Yamunatira Vanachani Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.
All glory to the Son of devotees, all glory to the Son of devotees, all glory to the Son of devotees, all glory to the Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning, instead of the regular Bhagavatam class, we're reading from Chaitanya Charitamrita. तो आज हम श्रीमद् भागवतम की जगह श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Again, to Miranda Sya, Ganajana Salakaya, Saksura Veritam Vena Tasma, Sri Gurve Maha. Chaitanya Manovistam, Sthapitam Gina Bhutale, Swayam Rupam Garamayam, Dadata Swa, Padantikam, Vandise Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodatu, Gurudaya Puspavantu, Chida Chandatamam. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadara, Sri Vasari, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Swami Namaste, Saraswati Deva, Gaura Vani. Pacharine nirvishesa sunyavadi pachatya disatari. Vancha kalpataribhya cha kripa samudya eva cha patitanam pavabhyo vaishnavabhyo namo. So, I welcome everyone. आप सबका स्वागत है। Today is Monday. आज सोमवार है। It's a working day. आज वर्किंग डे है। So some of you who are professionals, you could just zoom to the office, but you prefer to hang around to be part of the class. So thank you. तो आप में से कई सारे लोग कार्यरत प्रोफेशनल्स हैं, फिर भी आपने चुनाव किया कि डायरेक्ट ऑफिस जाने की बजाय आप यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। So the title, we're reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya volume. Yes. Huh? Madhya Lila, chapter 16, we're from text 209. The title of this chapter is The Lord's Attempt to Go to Vrindavan. तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 16 से पाठ कर रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा, प्यार संख्या 209। So, when Lord Chaitanya was in Jagannath Puri, King Prataparuda Maharaj was very much attached to him, and the attachment was so intense that it started to develop some strategies to keep Chaitanya in Jagannath Puri, because he had Chaitanya is making some plans to go to Vrindavan. तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में है। वहां पे महाराज प्रताप रुद्र बहुत ही आसक्त है महाप्रभु से, और वो आसक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि अब वो ये योजना बना रहे हैं कैसे महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में रखा जाए, क्योंकि महाप्रभु उस समय वृंदावन जाने का योजना बना रहे थे। You know, sometimes people in management science, they think that, oh, they are the only people who have adept knowledge, information, culture about strategy.
But strategy has been there since time immemorial, and people have been using different strategies to attain their goals. तो बहुत बार मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं स्ट्रैटेजी को लेके और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, परंतु ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी का, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है. Every community develops by the implementation of specific strategies to sustain the growth. तो हर समुदाय कुछ ना कुछ योजनाओं का इम्प्लीमेंट करना चाहता है, स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना चाहता है जिससे वो बड़े, ग्रोथ हो उनकी. And the strategy that was being devised by Bhakti Maharaj was such that he has to liaise with Lord Chaitanya's close associates, Ramananda Rai, Sarvabhauma Bhattacharya. If you have to implement a particular strategy, it's called, in change management, we call it a change initiative. You can't do it alone. You have to get people who have to support you to implement that strategy. तो महाराज प्रताप रुद्र का योजना ये था स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का कि महाप्रभु के जितने करीबी पार्षद थे वो पहले उनको प्रभावित करना चाहते थे उनकी सेवा करके, तो रामानंद राय इत्यादि. तो स्ट्रैटेजी अगर आपने कोई इम्प्लीमेंट करनी है, कोई चेंज लाना है, तो आप अकेले नहीं ला सकते, आपको अन्य लोगों का सहयोग चाहिए होता है. So King Prataparudra is not just an ordinary king. He knows management perfectly well, especially strategy. He said, people are very proud. In this big company, I am the strategist. तो महाराज प्रताप रुद्र कोई साधारण राजा नहीं थे, बहुत सशक्त राजा थे और उनको पता था कि स्ट्रैटेजीज कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं. आज के समय में लोगों को बड़ा गर्व होता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूं. What do you call this president of Russia? What's his name? Putin. Putin is very proud because he says he is a strategist. तो जो रशिया का अध्यक्ष है पुतिन, वो बड़ा गर्वित है, उसको लगता है कि बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है. A king, a manager must have adept knowledge and implementation of models of strategies. जो राजा है या जो मैनेजर है, तो उनको इस विषय के ज्ञान को गहराई से समझना चाहिए और उस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है पता होना चाहिए. And King Prataparudra is a good example. He has to create some what you call a coalition, a team, and his team members were Sarvabhauma, Ramananda Raya, the close associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो महाराज प्रताप रुद्र उनको पता था कि कैसे स्ट्रैटेजी लानी है, तो उन्होंने महाप्रभु के जो सबसे करीबी पार्षद थे सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, पहले इनको टीम में लिया. He wanted Lord Chaitanya to stay in Jagannath Puri. Spiritual attachment. This is very good. उनकी इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु राय, इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है. यह आध्यात्मिक इच्छा है. We can look it from another angle that why is the king being manipulative? He wants to keep Lord Chaitanya there. Lord Chaitanya has a desire. He's the supreme independent personality of Godhead. He could choose to do whatever he likes. He could choose to go wherever he wants. Why is Prataparudra Maharaj trying to interfere with the king, with Lord Chaitanya's agenda? अब इसको दूसरे नजरिए से देखें तो कोई कह सकता है महाराज प्रताप रुद्र इस प्रकार से मैनिपुलेट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु तो परम पुरुषम भगवान है, पूर्ण स्वतंत्र है, तो इस प्रकार से उनकी स्वतंत्रता, उनकी इच्छा में क्यों बाधा डाल रहे हैं? But even Lord Chaitanya himself, he knew about, he is the super soul in everyone's heart, so he knew about Prataparudra's strategy. तो अगर महाप्रभु परमात्मा है, हर जीव के हृदय में स्थित हैं, तो क्या उनको महाराज प्रताप रुद्र की स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता होगा? But he just acting as an ordinary human, so to say, he just follow the flow. तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ पर लीला कर रहे हैं और इस योजना के साथ चल रहे हैं. But eventually, he left Jagannath Puri
and he came to Bengal. तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के यात्रा पे निकलते हैं और सबसे पहले बंगाल आते हैं. Now, Lord Chaitanya's advent on the planet is a great boon for especially Mrityu Lokabhasis, people on this planet. It's a great boon for all of us. महाप्रभु का इस धरातल पर प्रकट होना एक महान वरदान है इस सारे धरती लोक के निवासियों के लिए. Because before the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Narada Muni once was traveling all over, and then he felt very despondent. And what was the cause of his despondency? He visited Dwarka, he met Lord Krishna, and Lord Krishna perceived that Narada Muni was despondent. So he asked Narada, what is going on with you? तो महाप्रभु के अवतरण से पहले नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे और वो यहाँ की स्थिति देख के बड़े ही हतोत्साहित थे. तो वो द्वारका में गए और द्वारका में भगवान कृष्ण ने जब नारद मुनि को देखा तो वो समझ गए कि नारद मुनि बहुत उदास है. तो उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा. So Narada Muni, he opened up. You have to have someone that you open up your heart to. Otherwise, some of the traumas that we face could be a problem. And therefore, Rupa Goswami prescribed that we should have confidence. Narada Muni, Lord Krishna is also one of his confidants. So when Krishna perceived his despondency and asked, he opened up to Krishna. He said, I have traveled all over the place. I feel sad and despondent because I couldn't find a single place where your names were being chanted. तो जैसे श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि अपने हृदय की बात को सामने खोल कर रखना, गुह्यम आख्याति प्रचिति, उसी प्रकार से नारद मुनि ने उनके हृदय में जो था भगवान कृष्ण के समक्ष रखा और उन्होंने कहा मैं इतनी जगह भ्रमण कर रहा हूं, मेरे को एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां पर आपके पवित्र नामों का उच्चारण हो रहा हो. So Narada said, you have to do something about this. नारद मुनि ने कहा भगवान आपको इस विषय में कुछ करना होगा. So Lord Krishna mentioned to Narada that don't worry, I will come, I will incarnate as a devotee to spread my holy names myself. तो भगवान ने कहा नारद मुनि तुम चिंता मत करो, मैं एक भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा और पवित्र नामों का प्रचार करूंगा. So that was the springboard of Lord Chaitanya's advent. तो महाप्रभु के प्रकरण का ये एक धरातल बना. And we are understanding from this in this chapter how Lord Chaitanya, after being in Jagannath Puri for some time, he wanted to come to Vrindavan. But then, he was the life of Jagannath Puri. He was the life of Prataparudra. And if someone is very dear to you, nobody, I've seen that. If you're dear to someone, they won't want you to travel. They won't want you to go anywhere. Just be with us. तो महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु महाप्रभु कैसे जाते? वो जगन्नाथपुरी के प्राण थे, वहां जितने भक्त थे उनके प्राण धन थे, महाराज प्रताप रुद्र के प्राण धन थे. और मैंने ये देखा है जब आपके व्यक्ति को किसी के इतने प्रिय होता है तो आपकी इच्छा रहती है कि वो व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं ना जाए, वहीं आपके साथ रहे. So the strategic plan that Ramanand Rai and Sarvabhauma were able to implement was that they told Lord Chaitanya Mahaprabhu that, see, we're not saying don't travel to Vrindavan, but Ratha Yatra in Puri is just, at the corner. Why don't you wait, participate in Ratha Yatra, then you can go to Vrindavan. तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य ने योजना बनाई. उन्होंने वो महाप्रभु के पास गए और उन्होंने कहा कि महाप्रभु देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप वृंदावन मत जाइए, वह भी रथ यात्रा आने ही वाली है, तो रथ यात्रा अटेंड करके उसके बाद चले जाइएगा. See, if you read the Vedic literatures with rapt attention, with concentration, with devotion, you learn so many skills. So तो अगर आप ध्यान पूर्वक अपना ध्यान केंद्र करते हुए अगर इन अध्यायों को पढ़ते हैं
तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत सारे स्किल्स सीख जाएंगे। So here, one of the derivative factors is the skill of persuasion. They are trying to persuade Lord Chaitanya Mahaprabhu. Persuasion means that you come up with good reasons. Present to the person good reasons. Why you're proposing what they should do. Good reasons with logic. Not that, okay, I'm in power. Hey, you must do this. No, nobody wants to be controlled. तो यहाँ पे आप किसी को परसुएड करने की कला को कैसे सीखना है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। परसुएड करने का मतलब आप किसी व्यक्ति के समक्ष सारे लॉजिक रखिए उसके सामने। ऐसा नहीं है कि मैं सत्ता में हूं तो मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। कोई भी ऐसे नियंत्रित होना नहीं चाहता। So here, Sarvabhauma and Ramananda, they present a very good, very cogent possibility, cogent reason. Enticing reason, spiritually enticing. Ratha Yatra is coming, and Lord Chaitanya likes to dance, during the Ratha Yatra. Devotional festival is coming. In fact, see, I was in Vrindavan. I was planning to come to Faridabad on the 24th. And so later, the devotee who is assisting me said, the temple management, they want you to come on the 23rd. I said, why? I plan to go there on the 24th. They say, on the 24th, we have a festival, so we want you to come and be, part of the festival right from the commencement to the end. So then I was convinced because, this is a spiritual ceremony, I will get purified by coming. So they were able to persuade me to come earlier than the anticipated time I wanted to come. तो रामानंद राय ने बहुत ही बुद्धिमता से बहुत ही ऐसे लॉजिक प्रदान किए जो महाप्रभु के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत एंटाइसिंग थे, प्रेरणा देने वाले थे। महाप्रभु को नृत्य करना इतना पसंद था कृष्ण के नामों पे। उन्होंने कहा रथ यात्रा आने वाली है, उसमें आप खुल के नृत्य कीजिएगा। तो उसी प्रकार से महाराज अपने जीवन से उदाहरण दे रहे हैं कि मेरा उनका 24 को फरीदाबाद प्रोग्राम था, परंतु जो उनके असिस्टेंट और भक्त हैं उन्होंने उनसे निवेदन किया कि 22 को वहाँ शोभा यात्रा है, तो हम चाहते हैं कि आप उस समय आ जाएं। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअली एंटाइजिंग रीजन देना उस व्यक्ति के हिसाब से, ये परसुएशन की कला आप यहाँ से सीख सकते हैं। So it's a very good skill. Even in relationships, people have fracas because they don't have any skills of persuasion. They just say, I want this to be done. What's the reason? They can't present any reason. तो ये जो कला है, ये बहुत महत्वपूर्ण कला है। संबंधों में अक्सर दरारें पड़ जाती हैं, आपस में क्लेश होते हैं। क्यों? एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे हिसाब से ये कार्य होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्यों होना चाहिए, और उसके पास कोई कारण ही नहीं होता बताने के लिए। So in this case, okay, Prataparuda, Lord Chaitanya also knows Prataparuda loves him. So Ramananda and Sarvabhauma, they could just tell Lord Chaitanya that King Prataparuda wants you to stay longer in Jagannath-puri. But that will evoke some type of, a response from Lord Chaitanya that Ramananda and Sarvabhauma may not like. Because then it seems that openly that the king wants to control the Lord. So the king has to present some cogent, enticing reason. That is how Ramananda and Sarvabhauma implemented that strategy. First, Ratha Yatra is coming. Please stay and participate in Ratha. The devotees will love to see you dance. The devotees will want to see you participate in Ratha. So, and Lord Chaitanya couldn't say no. तो देखिए, महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु को पता था महाराज प्रतापरुद्र उनसे कितना प्रेम करते हैं। फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय ने जाके ये नहीं बोला कि महाराज प्रतापरुद्र चाहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी में रहो, कि ऐसा प्रतीत होगा कि एक राजा महाप्रभु को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही लॉजिकली ये सारे तथ्यों को सामने रखा और ऐसे कारण बताए जिससे महाप्रभु प्रेरित हो सके कि रथ यात्रा आने वाली है, सारे भक्त लोग इतना उत्साह से भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, तो आप उसमें भी शामिल होइए, उसके बाद आप चले जाना।
So, dealing with people is not a question of I am the senior, I am the parent, I am the boss, I am the guru, I am the Swami. You have to present cogent reasons, enticing possibilities to convince people to cooperate with your proposition. तो अगर आप कोई सीनियर हैं तो ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हूं, मैं स्वामी हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मेरे पास ये पोजीशन है. आप चाहे कुछ भी हो, फिर भी आपको बहुत ही सशक्त कारण, बहुत लॉजिकली चीजों को, तथ्यों को प्रस्तुत करना होगा, उन सारी संभावनाओं को प्रस्तुत करना होगा कि जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका सहयोग देने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित हो सके. So, after the first reason, that chapter is passed, then they brought another chapter that, you want to go to Vrindavan. Now it's very cold in Vrindavan. And Dola Yatra is coming. So, why don't you stay a little bit, participate in Dola Yatra? तो जब ये रथ यात्रा वाला अध्याय खत्म हो गया, ये लीला हो गई, उसके बाद अगले उन्होंने एक नया अध्याय प्रारंभ कर दिया. उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाइए वृंदावन, बट अभी डोल यात्रा आने ही वाली है तो उसमें भाग लेके जाइएगा. So these are presentations that are replete with affection, love, and care. If someone comes to you to tell you, oh, where you want to go right now, that place is very cold now. तो ये सारी प्रस्तुति उन्होंने महाप्रभु के समक्ष रखी बहुत ही स्नेह से, प्रेम से, केयर के साथ. जैसे अगर कोई वृंदावन जाना चाहे और कोई भक्त आके प्रेम से, आप अभी वृंदावन जाना चाहते हैं, वहां तो अभी बहुत ठंड होगी. And Vrindavan is really cold during, especially in December. I remember I've seen some Europeans and Americans who come, even people who come from really cold European countries. They complain about Vrindavan. They complain about the cold of Vrindavan. In fact, some people live in Query. I've seen it. They say, why did Krishna have to take bath here? This place is so cold. तो मैंने खुद देखा है, दिसंबर में वृंदावन में इतनी ठंड पड़ती है. यूरोप, अमेरिका जैसे देश, ठंडे देशों से भी अगर कोई आए तो वो भी इस बात की शिकायत करते हैं कि वृंदावन में बहुत ठंड है. वो ये पूछते हैं कि भगवान ने इतने ठंडे प्रांत में जन्म क्यों लिया. So Ramananda and Sarvabhauma, they were agents of King Prataparudra. And therefore, there's a lot to learn from me, especially those who are managers and those who are having households. You see, one of the causes of the frictions in the homes, in the households, is that somebody thinks that he's the breadwinner, he's the boss, he's the Ishwara, and he gives instructions and order, and sometimes there are no cogent reasons for the instructions, for the decisions. तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य स्पेशल एजेंट्स थे महाराज प्रताप रुद्र के, गृहस्थ थे. और हम कई बार ऐसे भी देखते हैं कि गृहस्थ में जो व्यक्ति कमा रहा होता है उसको लगता है कि मैं कमा रहा हूं और मेरे हिसाब से पूरा परिवार को चलना चाहिए, और बिना किसी कारण के, सिर्फ इसी भाव में, ईश्वर भाव के कारण से. So eventually, after all of these presentations, all of these strategies we executed, Lord Chaitanya eventually left Jagannath Puri for Bengal. For Vrindavan, for Bengal, yeah. तो इन सब प्रस्तुतियों के बाद अंततः महाप्रभु ने प्रस्थान किया वृंदावन की ओर जगन्नाथपुरी से. So he came to Bengal, and one of the first places he visited was Panihati. How many of you have been to Panihati? तो बंगाल आए और वहां पे सबसे पहले पानीहाटी के वहां से निकले. आप में से कितने भक्त पानीहाटी गए हैं? Panihati is a very special place. Lord Chaitanya had wonderful pastimes there. बहुत विशेष स्थान है, महाप्रभु ने वहां लीलाएं की. So when you do have
your schedule for your yatras. Also put Panihati, include Panihati. It's a nice place. Temple, a temple is just by the Ganga. जब आपकी यात्रा का योजना हो तो कृपया पानी हाटी को भी उसमें सम्मिलित करें। वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है गंगा नदी के तट पर ही। So here the previous text reads that Lord Chaitanya was at the home of Madhava Das for and the place was heavily crowded. Hundreds, thousands of people were there. तो महाप्रभु माधवदास के घर पर थे और वहां बहुत भीड़ लग गई, हजारों भक्त आए। And in text, this present text we are commencing on, 209, it says, Satadina Rahita Taloka Nistarila Saba Aparadigane Prakare Tadila. The Lord stayed here. The Lord stayed here for 7 days. That means at the home of Madhava, and delivered all kinds of offenders and sinners. Yes. महाप्रभु वहां 7 दिनों तक रुके रहे और उन्होंने सभी तरह के अपराधियों तथा पापियों का उद्धार किया। Santi Purachaya Grihe Eche Ela Sachi Manta Mili Tanra Duka Kandele Sachi Mata Mili Tanra Duka Kandele. After leaving Kulia, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the house of Advaitacharya at Santipur. It was there that the Lord's mother, Sachimata, met him and was thus relieved of her great unhappiness. कुलिया छोड़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर गए। यहीं पर उनकी माता सची माता उनसे मिली और उनका महान दुख दूर हुआ। Text 2:11. Tabe Rama Keli Grame Prabhu Yeche Gela Natasala Hete Prabhu Puna Firi Ela. The Lord then visited the village known as Ramakeli and the place known as Kanai Natasala. From there he returned to Santipur. इसके बाद महाप्रभु रामकेली गांव तथा कनाई नटशाला नामक स्थान गए। वहां से वे शांतिपुर लौट आए। Santipur Punakela Dasa Dinavasa Vistari Vani Yachena Vrindavana Dasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu stayed at Santipur for 10 days. This has all been described very elaborately by Vrindavan Das Thakur. श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में 10 दिनों तक रुके। इसका विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। And so the next text, Srila Kaviraj Das Goswami, he was very, very cautious of repeating things, and this is also one of the objectives of mundane scholarship, especially in management science. If you are conducting a research, the question is this something new? Is it something new? Or some other person has already documented this and you want to just, repeat the same. So, Srila Krishna Das Kaviraj was such a Paka Gaudiya Vaishnava scholar that he was careful not just to repeat what Vrindavan Das Thakur has already documented in his literature. तो अगले प्रयार में हम देखेंगे कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सावधानी बरत रहे हैं कि वो चीजों को दोहराए ना, कि जो वृंदावन दास ठाकुर पहले से बता चुके हैं। हम आज के भौतिक जगत में भी देखते हैं, मॉडर्न स्कॉलरशिप में या जो भी एकेडमिक रिसर्च होती है उसमें पहला प्रश्न यही होता है कि इसमें क्या ये नए है या ये पहले से इस पर रिसर्च हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने पक्के गौड़िया वैष्णव स्कॉलर थे और इन बातों से परिचित थे, इनका बहुत ध्यान रखा। Atewa hihantara nik nakalum vistara
Nakelum vistara punarukti haya granta badaye apara. I will not narrate these incidents because they have already been described by Vrindavan Das Thakur. There is no need to repeat the same information, for such repetition will unlimitedly increase the size of this book, increase the size of this Chaitanya Charitamrita. मैं इन घटनाओं का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर द्वारा ये पहले ही वर्णित हो चुकी हैं। उसी बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे दोहराने से इस ग्रंथ का आकार बढ़कर असीम हो जाएगा। So, the reason for not necessarily increasing the volume of the Chaitanya Charitamrita and not repeating what Vrindavan Das Thakur has already documented was that when you have something new, it is more refreshing, enticing, and digestible. Because I remember I went for some conference some time ago, and then this the professor, one of the professors who was in charge of that academic association, he said, "Das, we want your works in our journal, published in our journal." So I said, "Excuse me, sir, but why don't you solicit research papers from these other professors?" And his response was that, "What these guys say, what the other professors say," he said, "we know, they know. What you say, we don't know." So, even the scholars, they want something refreshing, something new. They don't want to just hear again and again what another scholar has researched on. This was the concept behind Vrindavan Das Thakur's not keen in just increasing the volume of his work, repeating what Vrindavan Thakur has already documented, because he wants the desperation of the readers. He wants the readers to submerge themselves in this ocean of nectar of Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastime, but in a new setting, in a refreshingly new setting. What the devotees have not read from Vrindavan Thakur's works. He wants, this is called bridging the gap. There is a gap. He wants to bridge the gap. Then you can sip the nectar. तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कारण दे रहे हैं कि ग्रंथ का आकार बढ़ना ये एकमात्र कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जब भी आप कोई नई चीज का वर्णन करते हैं तो वो उतना रिफ्रेशिंग होता है, इंटाइसिंग होता है और पचाने लायक होता है। महाराज उदाहरण दे रहे हैं, कुछ समय पहले वो एक कॉन्फ्रेंस में गए जहाँ पे उस एकेडमिक एसोसिएशन का डायरेक्टर था, तो वो महाराज का जो पेपर है उसको पब्लिश कर रहा था। तो महाराज ने उससे प्रश्न किया है, क्या मेरा पेपर ही क्यों पब्लिश कर रहे हैं, ये सारे प्रोफेसर्स हैं, इन सब का भी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सब प्रोफेसर्स जो बोलेंगे और जो कहेंगे वो हमें पता है, आप जो बोलोगे वो हमें नहीं पता। तो बाहर की दुनिया में भी एक नई चीज को सुनने की उत्कंठा रहती है और आतुरता रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन सभी लीलाओं का वर्णन करना चाहते हैं जो वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं कही। तो महाप्रभु की लीलाएं एक नए परियोजन में, एक नई सेटिंग में वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि जो उनके श्रोतागण हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो महाप्रभु के कृपामृत लीला में गोते लगा सके, उसमें डूब सके, उनका अटेंशन, ईगरनेस चाहते हैं। Text 214 to 215. What text you're supposed to end? Remember? Last verse. 219. Huh? 219. Okay, so we're still on track. Okay. Taramadye mililaya yecha rupa sanatana rishimananda kela yeche patara sajjana.
Sutra Madhya Lila Amita Vanilam Atewa Punataha Ehana Likilam. Those narrations tell how Sri Chaitanya Mahaprabhu met the brothers Rupa and Sanatan, and how Rishimananda decorated the road. I have already described this in an earlier synopsis of this book. Therefore, I will not repeat the narrations here. इन वर्णों से पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह रूप तथा सनातन बंधुओं से मिले और किस तरह नृसिंहानंद ने मार्ग सजाया। मैं पहले ही इस पुस्तक के संक्षिप्त विवरण में इनका वर्णन कर चुका हूं, अतएव मैं उनको फिर से नहीं दोहराऊंगा। This information is given in Adi Lila 10, chapter 10, text 35, and Madhya Lila, chapter 1, text 155 to 162, and 175 to 226. ये जानकारी आदि लीला अध्याय 10 श्लोक 35 तथा मध्य लीला अध्याय 1 श्लोक 155 से 262 तथा 175 से 226 में दी हुई है। Text 216. Punarapi prabhuyari santipura ela Raghunatha dasa asi prabhure milila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to Santipur, Raghunath Das came to meet him. जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर लौटे तब रघुनाथ दास उनसे मिलने आए। Hiranya Govardhan Dwi Sahodara Saptagrame Bara Laksha Mudrara Ishwara. Two brothers named Hiranya and Govardhan, who were residents of Saptagram, had an annual income of 1,200,000 rupees. सप्तग्राम के निवासी हिरण्य तथा गोवर्धन नामक दो भाइयों की वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी। Purport. Hiranya and Govardhan were inhabitants of Saptagram in the district of Hooghly. Actually, they were inhabitants not of Saptagram, but of a nearby village named Krishnapur. They took their birth in a big Kayasa family, and although the family title has not been ascertained, it is known that they came from an aristocratic family. The elder brother's name was Hiranya Majumandar, and the younger brother's name was Govardhan Majumandar. Sri Raghunath Das was the son of Govardhan Majumandar. Their family priest was Balaram Acharya, who was a favorite of Krishna Haridas Thakur's, and the family's spiritual master was Yadnandana Acharya, a favorite of Vasudev Dattas. The village of Saptagram is located on the Eastern Railway from Calcutta to Burdwan, and presently the railway station is called Trisabiga. In those days, there was a large river there known as the Saraswati, and present-day Trisabiga is a great port. In 1592, the Pathanas invaded, and due to a flooding of the Saraswati River in the year 1632, this great port was partially destroyed. It is said that in the 17th and 18th centuries, Portuguese businessmen used to come aboard their ships. In those days, Saptagram, situated on the southern side of Bengal, was very rich and popular. The merchants, who were the principal residents, were called Saptagram
Savannah. What's that? My eyes are failing me. Sorry. This is the problem with old age. Savannah Vanix. There were very many rich people there, and Hiranya Majumandra, and also Hiranya Majumandra and Govardhan Majumandra belonged to the Kayasta community. They also were very rich, so much so that it is mentioned in this verse that their annual income as landlords means they had many houses renting out, amounted to 1,200,000 rupees. In this connection, one may refer to the Adilila chapter 11, verse 41, which describes Udaranadatta, who also belonged to the Saptagram Savannah Vanik community. So, that's end. Any comments or? किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न? In the absence of any comments or questions, we like to adjourn this meeting and move for adjournment. अगर किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी नहीं है तो हम इस सभा को यहीं पे विराम दे देंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं महाराज से। Any comments, any questions you want to ask, either in devotional service, in your professional life, in school or whatever. Devotional service में, professional life में, school में, work में, कोई भी प्रश्न है पूछना चाहें। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, I have one question, that is, what are the few things to be kept in mind while managing something or spiritual service? What are the two things we need to keep in mind while we are managing something? Managing what? Managing something. Something. Yes, something. Yeah, we have to keep in mind that we are dasa anudas, and that we're just instruments in the hands of the Lord. And the people under our care are part and parcels of Krishna. Lord Krishna mentions in the Gita, Mama Evam So Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. So if we see everyone that is in our team or under our care as part and parcel of Krishna, what will be the way we have to treat them? We have to treat them just like the way we will treat our guru. Yeah, it's like that. तो प्रभु जी का प्रश्न था, हम भी कोई चीज मैनेज करते हैं तो उसमें किस प्रकार से सही रूप से मैनेज कर सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज ने सबसे पहले उत्तर दिया कि ये स्मरण करना है कि मैं दासों के दासों का दास हूँ। बाद में फिर ये स्मरण करना है कि जो मेरी टीम में अन्य मेंबर्स हैं वो भी कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल्स हैं, तो मेरे को उनको किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना जैसे मैं अपने गुरु के साथ करूंगा। और फिर महाराज ने 3 बार इस पे बल दिया कि हाँ मैं यही बोल रहा हूँ। Managing people is a very challenging thing. लोगों को मैनेज करना बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, कार्य है। So many people on this planet, they want power. इस लोक में बहुत सारे लोग हैं जो पावर चाहते हैं। They want to manage a big company, big community. बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े समुदाय को मैनेज करना चाहते हैं। But the irony is that in most cases, they don't have the skills of self-management. परंतु व्यंग्यात्मक बात यह है कि उनको अब खुद को मैनेज करने के स्किल्स भी नहीं होते उनके पास। So,
How do you try to manage people when you can't manage yourself? तो जब आप अपने खुद के जीवन को मैनेज नहीं कर सकते तो लोगों को मैनेज कैसे करेंगे? So it's a problem. And also, when you're managing a community, say you're the temple president of this temple, it's a very risky service. और किसी समुदाय को मैनेज करना बहुत ही खतरनाक कार्य है. जैसे समुदाय यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट बनना बहुत रिस्की बिजनेस है. Just like being a mother, being a father, is also a risky business. जैसे कि एक माता और एक पिता बनना ये भी बड़ा रिस्की काम होता है. In the Ramayana, there's this incident where a dog who was brutally abused by a Brahmin went to Lord Ramachandra's court to report about the abuse. The Brahmin was coming, the dog was lying on the road. The Brahmin said, "Hey, get out there." The dog completely ignored the Brahmin. He didn't care about the Brahmin. The Brahmin was walking with a walking stick. So he used the walking stick and hit his head. And he started bleeding. तो रामायण में कथा आती है कि कैसे कुत्ते को उसका शोषण होता है एक ब्राह्मण के द्वारा. तो ब्राह्मण जा रहा होता है रास्ते में, तो कुत्ता वहां पे लेटा होता है. ब्राह्मण कहता है मेरा रास्ता छोड़ो. वो उसको पूरा वेलना कर देता है, कोई बात नहीं सुनता. ब्राह्मण के हाथ में एक छड़ी होती है और उसको जोर से मारता है. तो उसको चोट लगती है तो वो भगवान राम के दरबार में जाता है शिकायत लेकर. In fact, for hitting the dog with his stick, it just shows that he's not a Brahmin. तो अगर कोई कुत्ते को अपनी छड़ी से मार रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो शूद्र ही है. So this dog went to report the matter at Lord Ramachandra's court. In fact, court was in session and Lord Ramachandra requested Lakshman to go to the gate and find out if anybody is there with a complaint, he should bring him in. Lakshman went there. He saw the dog, but he was thinking, Ram meant, anybody who is there means human being. Bring them if they have a complaint. So he went back to Ram to say, nobody. तो वो जो कुत्ता है भगवान राम के दरबार में गया शिकायत लेके. तो भगवान राम की सभा चल रही थी, तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि बाहर जाओ, गेट पे देखो, किसी की भी कोई शिकायत है तो उसको अंदर ले आओ. तो लक्ष्मण को लगा भगवान राम मनुष्य के बारे में कह रहे हैं, देखा वहां कोई भी नहीं था, तो वैसे ही आ गए. और भगवान राम को कहा कि कोई नहीं है. So Ram told him, go back. If even there is any animal, bring them. They have some complaint, bring them. भगवान राम ने लक्ष्मण को दोबारा भेजा, अगर कोई पशु भी है तो उसको भी सभा के अंदर लाओ, किसी के पास कोई भी शिकायत है, कंप्लेंट है. I'm trying to answer your question about our attitude towards people we are managing. So they brought the dog, it was bleeding. So Ram asked, what is the problem? So he explained that he was assaulted. When you injure somebody, it's called, in legal terms, it's called assault occasioning harm. It's a criminal offense. तो उस कुत्ते को लाया गया. भगवान राम ने पूछा आपकी क्या शिकायत है. तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसे पीटा गया, मेरे पे असॉल्ट हुआ है. तो महाराज बता रहे हैं कि कैसे असॉल्ट एक क्रिमिनल चार्ज है. So they asked the dog what happened, and then he said one Brahmin injured him. He was on the road. Brahman said he should leave. He ignored the Brahmin, and the Brahman hit him with his walking stick and injured him. तो भगवान राम ने पूछा कि क्या हुआ था. उसने पूरा इंसिडेंट बताया कि मैं था, लेटा हुआ था, ब्राह्मण आया, उसने मेरे को हटने के लिए कहा, मैंने उसको इग्नोर किया और उसने छड़ी से मेरे को पीटा. So Ram came to demonstrate how to lead communities, how to lead society. भगवान राम का अवतरण हुआ है ये दिखाने के लिए कि कम्युनिटीज को कैसे लीड किया जाता है. So they ordered, Ram's court, they ordered the Brahmin to come to testify, to defend himself. So the Brahmin came. They asked him, Brahman,
He said, yes, I hit him. This is the reason why I hit him. I asked him to leave the road. I'm a Brahmin, huh? I'm coming, get out from the road. He refused to get out. तो भगवान राम ने भेजा, उस ब्राह्मण को बुलाया गया उसको टेस्टिफाई करने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, और भगवान राम ने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि हाँ ये सब हुआ था, ऐसा किया है. Anyway, to cut matters short, the case was adjudicated and they found the Brahmin guilty. So they want to pacify Mr. Dog. They asked Mr. Dog, what is the best punishment for this Brahmin? तो पूरा केस समाप्त हुआ, उसमें बताया गया है ब्राह्मण गिल्टी है, और उस कुत्ते को शांत करने के लिए उससे पूछा गया कि मिस्टर डॉग, आपके हिसाब से क्या चीज आपको संतुष्ट करेगी? And the dog said, make this Brahmin the president of such and such a temple. तो उस कुत्ते ने कहा कि इस ब्राह्मण को इस मंदिर का अध्यक्ष बना दीजिए. So the jurors, they were like, wondering, what is wrong with this guy? तो वहां पे जितने मंत्री थे उनको समझ नहीं आया कि इस कुत्ते के साथ क्या गलत है, क्या बोल रहा है. This Brahmin committed an offense. He needs to be punished. And Mr. Dog is saying, we should promote him, we should give him a position. What is this? तो उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मण ने तो एक ऑफेंस किया, अपराध किया है, और उसके फलस्वरूप में इसको प्रमोट कर दिया जाए, इसको एक गद्दी दे दी जाए. So the members of the jurors, they say that they don't understand. He should explain what he's talking about. But Ram understood everything. He just kept quiet. तो वहां जो जितने भी मंत्री थे उन्होंने कहा कि हमें समझाओ, हमें समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है. परंतु भगवान राम वो तो सब समझते थे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो शांत बैठे रहे. So the dog explained, because they asked him to explain why he's making this type of proposition to the court. तो फिर उस कुत्ते ने समझाना शुरू किया, क्योंकि उससे पूछा गया था कि इस प्रकार का प्रस्ताव वो क्यों दे रहा है. So he said, you know why I'm a dog in this lifetime? तो उसने उत्तर दिया कि आप सबको पता है कि मैं इस जन्म में कुत्ते की योनि में क्यों आया हूं. I was the president of a Madhya. पिछले जन्म में मैं उस मंदिर का अध्यक्ष था. And I have to absorb some of the sinful reactions of every member of that community. And that weighed on me. That's why I'm a dog in this lifetime. तो उस मंदिर का जो समुदाय था उसमें जितने सदस्य थे, तो उनके साथ जो हमारी डीलिंग हुई या उनके जो पाप है उसका फल मेरे को अपने ऊपर स्वीकार करना पड़ा, और इसलिए मेरा इस जन्म कुत्ते की योनि में हुआ. Yeah, so it shows how people really are mad, crazy about becoming, getting power. Even in ISKCON, I've seen that. People are just struggling, a fight to get position, to get power, president, GBC, this, that. But it comes with some implications. तो मैं देखता हूँ कैसे आप पूरे संसार में लोग बड़ा उनके अंदर ये ललक रहती है कि कैसे पावर मिले, पोजीशन मिले. और ISKCON के अंदर भी बहुत बार लोग लड़ते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, GBC बन जाऊं. तो इन सब पोस्ट के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं. In the Bhagavatam, it's mentioned that one should not be a teacher, one should not be a parent, one should not be a guru, one should not be a demigod, except they have the potency to release their dependence from the onslaught of birth and death. भागवतम में लिखा है किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, शिक्षक नहीं बनना चाहिए, माता पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक उनके पास ये योग्यता ना हो कि उन पे जो आश्रित लोग हैं उनका वो उद्धार कर सके संसार चक्र से. So sometimes we need to hear the bitter truth. Life is not so juicy the way we think. Even married life is not so juicy with the way we think. Even being a guru is not so juicy the way we think. Being a teacher is not so juicy the way we think.
life is full of problems. तो बहुत बार कड़वा जो सत्य है उसको भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए। गुरु बनना बहुत जूसी चीज नहीं है, और वैवाहिक जीवन बहुत जूसी चीज नहीं है, माता पिता बनना बहुत जूसी चीज नहीं है। तो जो जीवन है वो समस्याओं से भरा हुआ है। So, does it serve your purpose? Okay. All right, we'll end here because I have to go again all the way back to Faridabad. तो हम यहीं पर समापन करेंगे क्योंकि मेरे को भी वापस फरीदाबाद भी लौटना है। Sri Chaitanya Mahaprabhu ki जय जय। His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ki। So let us thank Maharaj by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We request Maharaj for his more and more of this divine association. Please come again and again for your valuable association. Maharaj, whenever you travel to India, please make Punjabi Bagh. Understood, yeah. That's a good logic. Maharaj, we are writing a research paper also. How ethics from Bhagavad Gita can help school students. How ethics from Bhagavad Gita can help school students fight climate change. Oh, very good. So you can. Who is pioneering that? So Karuna Chand Prabhu is here. He is the director, and along with him, there's Dr. Suruchi Mittal is there, and there are two more members. Some are from outside academic world, some are devotees. So we have a team. It's good because you see we have a lot of words in our movement. Lord Chaitanya, Srila Vyasadeva, Lord Chaitanya, Prabhupada, they left a legacy behind, such a rich legacy that we can package some of these concepts and constructs in providing solutions to global problems. So yes, to give nice Bhagavatam class, nice Bhagavad Gita class, it's a good team. Okay, it's very refreshing, very fine. But this does not solve the problems of the world. We have to package what we have been given by the acharyas and use that to provide solutions to the problems of the world. Otherwise, people would think they are not a religious organization. Religious people, they just want to save their neck. They are afraid of coming to try to help with problem solving in the material world, so they run to become priests. But we have so much things in our literatures. So it's a very good adventure. I think even in scholars, last time they invited me for the conference at Jamie University, which is very good. See, in India, I've traveled around and I've seen so many devotees who have PhDs in even in management science. Now, you can have a PhD in management science and not really use it for preaching, because management science, in most cases, you may not see anything that will enable you to utilize that skill in preaching. But that's not true. See, I started my PhDs in applied management and decision sciences, and it opened up a whole array of opportunities in my preaching, because I did something, for instance, on crime, criminology, so the general theory of crime, and I'm able to correlate that theory to Rupa Goswami's first text in the Upadishamrita. And so, when you have those skills, you talk basically, it's not a dogma, but it becomes very scientific. So we have all those talks in our literature. It's good. Some devotees are teaming up to make some type of. So we were trying to persuade you to please come again.